Jain, I welcome you back, students. Previously, we talked a lot about the formation and the evaluation of United Nations organization. Even I talked in details about the organs of United Nations organizations. What are the important organs? How many organs are there? There are 6 organs, right? Out of those 6 organs, the trusteeship councils don't have relevance today. So what are the most important organs, or which is known as the soul of United Nations organization? That is the Security Council, which is said to be the most important organ, you can say, in terms of otherwise known as world government or world parliament, that is General Assembly. So we have General Assembly. In General Assembly, all the members country sent 5 members to the General Assembly from each of the members country, but these 5 members, whenever any resolutions being passed, they are supposed to cast only 1 vote, right? The second one, most importantly, you can say, it talks about Security Council. In the Security Council, we have 15 members, 5 permanents, 10 non-permanent members. 5 permanent members forever, they are USA, United Kingdom, Russia, France and China. The 10 non-permanent members, they are basically being nominated or the elected, you can say, from the zone basis, and once elected, they can continue for 2 years. Presently, from 2021 to 23, India is also being elected as a non-permanent member of Security Council. Then one of the most important organ, otherwise known as Economic and Social Council, which looks after more or less almost all those agencies, right? Then apart from that, you are having ICJ, International Court of Justice, which is otherwise known as the World Tribunal. Like you are having the 3-tier judicial system in India, that is the district court, then you can say about the High Court and the Supreme Court, right? These are the different judicial organizations in India. Similarly, in order to settle the disputes across the world, you can say, we are having International Court of Justice, and the International Court of Justice is having its headquarters at Hague. So General Assembly, Security Council, International Court of Justice, Economic and Social Council. So all 4. Then the 5th one could be the Trusteeship Council, which don't have any relevance today. The Trusteeship Council usually was being formed, the organization was being, these organs, you can say, usually work for the establishment of the democracy and socio-economic development of all newly independent country. जो भी colonial rule से independence मिला था, right? उसी कंट्रियों को तो पहला इनिशियल पीरियड का जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाना एंड द इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने से लेके जो इनिशियल 2-4-5 साल का जो डेमोक्रेटिक सेट ऑफ है, गवर्नमेंट का सेट ऑफ है, वो ट्रस्टीशिप काउंसिल एज ए ट्रस्ट देखा करता था. बट नाउ वी डोंट हैव एनी ऑफ द कंट्री लेफ्ट आउट एज नॉन इंडिपेंडेंट कंट्री, so that the trusteeship council usually don't have its relevance at present. And the last one, the secretariat. ये जो पास होंगे, जो भी रेगुलेशन पास होगा, जो भी काम होगा, who is going to implement this? Are the education authority. Like in India, you are having the secretariat, the central government का अपना secretariat है, अपना ministry का अपना secretariat है. ऐसे ही United Nations organization का अपना secretariat है. In United, the otherwise known as the headquarter of United Nations organization, and the head of the secretariat is the Secretary General, right? So the Secretary Generals also, they are having more than 3,000 bureaucrats, you can say, being appointed from across the world. So this is what the setup of the different organs of United Nations organizations, right? After that, I discussed about the different agencies, out of which a few most important agencies like International Labour Organization, ILO, the UNICEF, UNESCO, right? WHO, FAO, WTO, these are all important. You can UNDP, then Amnesty International, and so on. So many agencies are there which looks after the development of socio-cultural economic development across the world. Then the most important aspect which we are going to now discuss, that is the reforms of UN after the Cold War. What we are going to discuss? The reforms of UN after the Cold War. Means what are the reforms? Are the reforms being done after the Cold War? Already in the previous class I talked a little about during the Cold War politics. UN was like a sandwich. UN was like a sandwich in between the two superpowers. During the Cold War era,
United Nations organizations was otherwise you can say being acted as sandwich between the two superpower bloc, that was USSR and USA. So that it was not comfortable to you can say work, but in the post Cold War era the scenario has changed a lot. So what the scenario has changed? What scenario changed? What are the things that we are going to discuss now? So the reforms and implement are the fundamentals to any organizations to serve the needs of a changing environment. The UN is no exceptions in the recent year. There have been demand for reforms of the world body. However, there is a little clarity of consciousness about the nature. So two types of reforms you talks about. Number one, the reforms of the organizations, structures and process. पहला reforms क्या होगा? Organizational structures and process. क्योंकि 1945 में जो organizational structure था वो 1990 और 92 में भी वही organizational structure था, जबकि the charter or the constitution of United Nations organization is very flexible and as per the need a change होना चाहिए था, but विशेष change नहीं हुआ, organizational structure and process change नहीं हुआ, so that needs to be changed now. And the second one is its jurisdiction, a review of the issue which fall within the jurisdiction of the organizations, because now the world community they started telling that up to फिर there is a least possibility of having any war, the third world war. So इनका क्या jurisdiction होना चाहिए? United Nations organization का क्या jurisdiction होना चाहिए? Social development, economic development, cultural development, work in the field of education, work in the field of health, sanitation, right? Child labor, child trafficking, then human rights. These are all the aspects that United Nations organization has to work. Almost everyone is agreed that both the aspects of the reforms are necessary. And United Nations organization, it started itself reforming. So there are two types of reforms already I told about, reformations and counter reformations. So both the things were going side by side, right? And both the things are the both the sides of a similar coin. What they cannot agree on this precisely what is to be done, how is to be done, and when is to be done. Everything that's, yes, all the members country in each and everyone they agreed that ये दोनों होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, and कब होना चाहिए? This is very difficult to answer. So on the reforms of the structures and process, the biggest decision has been on the functioning of the Security Council. We already talked about जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो बेसिक कॉम्पोजिशन है बहुत यूनिक कॉम्पोजिशन है. 5 मेंबर्स हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं. सिंस इट्स इंसेप्शन 1945 से लेकर अभी तक वो 5 मेंबर्स ही परमानेंट मेंबर्स हैं. उसका एक्सटेंशन होने वाला था, नहीं हुआ है. दोज परमानेंट मेंबर्स यू नीड वेरी वेल, दैट्स यूएसए, चाइना, यूएसएसआर, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस. So if you can say make in terms of the world political system, नॉर्थ अमेरिका से एक कंट्री, एशिया से एक कंट्री, नॉर्थ अमेरिका से एक कंट्री, एशिया से एक कंट्री, राइट, दैट इज चाइना, एंड 3 कंट्री यूरोप से है. सो इट्स वेरी इम्बैलेंस्ड यू कैन से. यूरोप से 3 कंट्री, इट्स वेरी इम्बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ यू कैन से सिक्योरिटी काउंसिल. नॉर्थ अमेरिका से एक कंट्री, साउथ अमेरिका एंड एशिया से एक कंट्री. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. पॉपुलेशन में भी देखेंगे तो पूरा दुनिया का 70% पॉपुलेशन विच लाइज इन एशिया, राइट. लेकिन अगर उसका कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल देखेंगे तो इट्स वेरी अनइवन. साउथ अमेरिका का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू कैन सी इन द सिक्योरिटी काउंसिल द परमानेंट मेंबरशिप में साउथ अमेरिका से कोई नहीं, अफ्रीकन कंट्री से कोई नहीं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से कोई नहीं, एंड इतना बड़ा कॉन्टिनेंट यू कैन से दैट इज एशिया, वहीं से सिर्फ एक ही कंट्री. सो रिप्रेजेंटेशन इम्प्रॉपर है. That needs to be changed, right? So that's the thing that we have to discuss. That United Nations organization they have to discuss in order to increase the membership from Asia, Africa and South America. So that जो 5 है वो 7 या 9 होना चाहिए. एशिया से एटलीस्ट 1 या 2 मिलना चाहिए. That's why इसका the most important contenders like Japan and India एशिया से हैं. Then साउथ अमेरिका से अगर जाएंगे तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना दोनों ही हैं. अफ्रीका से साउथ अफ्रीका. सो एटलीस्ट 3 या 4 मेंबरशिप और बढ़ना चाहिए, बिकॉज अनइवन होना चाहिए, राइट, ऑड नंबर्स होना चाहिए. ऑन द इशू टू बी गिवन ग्रेटर प्रायोरिटी टू बी द ब्रॉट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूएन, सम कंट्रीज एंड एक्सपर्ट्स वांट द ऑर्गेनाइजेशंस टू प्ले अ ग्रेटर एंड मोर इफेक्टिव रोल इन पीस एंड सिक्योरिटी. दिस ऑलरेडी आई टॉक्ड अबाउट. They are now the organizations, you can say United Nations organization has to play important role in terms of health, education,
right? Health, education, environment, population control, human rights, gender equity and social justice. Because international peace and security तो अपने आप मेंटेन है ही अभी, because the things are made in such a way that एक दूसरे country अपने आप को मैनेज कर ले रहे हैं, but these are the area, humanitarian area that the organization has to work now. After the Cold War, the realities are different. After the Cold War, the realities are different, you can say. So what exactly that? After the Cold War, those realities are different. Here are some of the changes that occurred after the Cold War. Number one, the Soviet Union has collapsed in 1991. Soviet Union has collapsed in 1991 and is being divided into 15 CIS. The Soviet Union got divided into 15 CIS. Earlier it was only one country, but now it got divided into 15 CIS. So the number of countries to United Nations organizations has increased. Automatically it has increased, and out of those 15 CIS, only a few of them they have adopted communism or the socialism as the means of productions, or socialism, that was the economic ideology. Otherwise, more or less, most of the country they have adopted democratic with a republican form of government. Also, you can say now the world is a unipolar world. US is the only powerful nation in the 21st century and in the post-Cold War era. Rather, you can say in the 21st century, we have seen in a little bit of different eyes, you can say, that the world is no more unipolar, rather it's a multipolar world. During the Cold War era, it was a bipolar world because there are two came. One was Soviet Union and the second that was USA. But in the post-Cold War era, from 1991 onwards, if you can see, for another couple of decades, the world was having unipolar world. But in the 21st century, we can see it's a multipolar world. The relationship between Russia and the successor, Russia said to be the successor of United Nations, USSR, right? So the successor of Soviet Union and the US is the more cooperative. In between these two अगर relationship भी देखेंगे तो पहले जैसे hostility नहीं रह गया. China is the first emerging as a great power, and India also equally growing rapidly in terms of the GDP, in terms of the population, in every respect. If you can see that India and China is competing all those world great economy. The economy of Asia are growing at an unprecedented rate. You are competing with all those developed countries of Europe. If you can see, almost all the South Asian countries or Southeast Asian countries, their economy is very prosperous economy, except a few West Asian countries or the South Asian country. If you can see, the Southeast Asian country and the Gulf country, they are the most prosperous in terms of the economy also. Many new countries have joined United Nations organization. Initially it was having around 51 members country, and now we have crossed more than 195. A whole new set of challenges. See, the challenges in 1945 was entirely different. 1945 में चैलेंज किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट था, जो कॉन्सिक्वेंसेस था, उसको मिनिमाइज करना, उसको मैनेज करना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का काम था, एंड टू अवॉइड द थर्ड वर्ल्ड वॉर. क्यों बना यूनाइटेड नेशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले? क्यों बना? इसीलिए बना सेकेंड वर्ल्ड से पहले, ताकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो and जो treaty signed हो, that treaty should not be a humiliating treaty, because we knew it very well. 1919 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, एंड 1919 लास्ट पार्ट नवंबर में जब 11th of November जब ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन होता है, दैट वाज ए ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी. उसी टाइम ही दुनिया को पता चल गया था कि द ट्रीटी इटसेल्फ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इतना बुरी तरह से इटली, टर्की एंड जर्मनी को ह्यूमिलेट किया गया था, दैट गेव राइज टू हिटलर. एंड हिटलर उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही वॉज अ मेयर सोल्जर, इवन मुसोलिनी ऑल्सो, एंड दैट मेक देम फ्यूरियस. So now the challenge is different. The challenge of United Nations organization in 21st century is a little bit different. The whole new set of the challenges confronting the world, that's the genocide, civil war, ethnic conflicts, terrorism. There was a time the Western country, when India keep on shouting about terrorism, they were the worst sufferer of terrorism. Western civilization, Western country बोलते थे terrorism कुछ नहीं होता है. There is no word like terrorism. ये आपका internal problem है, आपका ये civil war है.
जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, लंदन में, फ्रांस में, हर एक जगह पे जहाँ ये टेररिस्ट अटैक करना शुरू किए, अलकायदा या ISIS, देन उनको समझ में आया कि यस, दिस पर्टिकुलर द टेररिज्म इज, you can say, the threat for the each and every country across the world and threat for the democratic country. And उनका कोई जात पात नहीं होता. There is no community specific or you can say religions for the terrorism. Terrorist का एक ही religion होता है, they wanted to kill people, and then you can throw money or whatever it may be and can be used against anyone else. Nuclear proliferations, climate change, environmental degradations, and the epidemic. These are all the areas that the United Nations Organization has to look after. In this situation in 1989, as the Cold War was ending, the question facing the world was what? Is the United Nations doing enough? It's a very vague question to be asked. Even आज भी अगर पूछें क्या is United Nations Organization whatever they are doing, is it enough? It's very difficult to measure. हम measurement कैसे करें कि जितना कर रहा है क्या enough है? Because human wants are all limited. Today you are in this particular level, in this particular positions. कल हम उस पोजीशन को जब अचीव कर लेंगे, then you will be having a different target, right? दो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें हम, लास्ट 75 ईयर्स का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें, तो इट्स डिड ए लॉट. एटलीस्ट इट्स सक्सीडेड टू अवॉइड थर्ड वर्ल्ड वॉर इन लास्ट 75 ईयर्स. जबकि हो गया होता 75 ईयर्स में एटलीस्ट वर्ल्ड वॉर का तो अवॉइड किया. सो मेनी एजेंसीज बीइंग फॉर्म, एंड नॉट ओनली दैट इट इज वर्किंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, but also what I was talking about, it's working in the field of medicines, health, education, right? The economic development, cultural assimilation. In each and every respect now United Nations Organization is working. They are having so many agencies, more than 30 agencies working across the world. Presently you might have come across with WHO, World Health Organization. This is also one of the important agencies of United Nations Organization, which is working day and night how to mitigate the impact of coronavirus. Right? Also, it was in 1991, LPG, that's liberalization, privatization, and globalization, being introduced in the world, and WTO was being formed in 1995, which played a very pivotal role, to make the entire globe or the world into a small village in terms of economy or business. And all those import quotas and all these restrictions, then the boundaries, then tariffs, barriers, all those things being removed, and the entire world now into make a global village. So like the agencies, it's did a lot across the year. If you can see that UN did a lot, but yes, miles to go. Is it equipped to do what is required, and what should it be doing and how? See, this is very important. You can say it's not like you can say even United Nations Organization is also in a democratic structure. It's not in a totalitarian structure or an authoritarian structure or a dictatorial structure. कि जो चाहें वो करें and entire world has to listen to them. It's not like that. Because whatever the decisions usually being given by United Nations Organization, these are all advisory. Right? At times they put restrictions or ban on us or the different countries, you can say. But a few powerful nations, still you can say United Nations has to be biased for that. USA कुछ भी करेगा, United Nations Organizations don't have anything to speak, because that's the most powerful nation. And United Nations Organizations का जो funding है, more than 50% of the funding खाली US देता है. So still you can say maybe that you can think United Nations Organization is a world government, but उस टाइप का representations नहीं है. उसका जो representation उस ढंग से नहीं है कि it can work according to our own expectations, और जो required है और जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें हो, not required or not possible at all. Next, the third and the important question to be asked, you can say, what reforms are necessary to make it work better? This is very important. Already I told you can say the Charter, United Nations UN Charter is a lively documents or a living documents. What is a living document? Living documents is a document which can be modified or the change or amended as per our need. Like
our constitution is a living document. So far you have made 104 changes or 104 amendments being already made in our constitution. That's why it's a living document. 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था. उस टाइम का सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था कि आज है नहीं. So जब नहीं है तो you have to make certain changes, modifications has to be done in the constitution, to make it a living document. Similarly, the UN Charter was finalized in 1945. So the 1945 world and 2020 world are different, entirely different. So how can you say that the similar charter of 1945 can be implemented in 1920? In 1930, 1940 में जाएगा तो has to be changed. So ऐसा नहीं है कि reforms नहीं हुआ है. Already I told you that United Nations Organization has made two types of reforms. Reforms are usually being two types. One is the reformations and the second is counter reformations. एक तो रिफॉर्मेशन हम जबरदस्ती कराते हैं, जरूरी है करो, एंड दूसरा काउंटर रिफॉर्मेशन हम खुद करते हैं. हमें लगता है कि नहीं, यस आई हैव टू डू दिस, ये मुझे चेंजेस करना चाहिए, अदरवाइज मेरा सर्वाइवल इज इन अ बिग क्वेश्चन मार्क. देन वी हैव टू डू दैट. सो बोथ द थिंग्स आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, साइड बाय साइड, राइट? So this is what I was talking about. What are the problems, you can say, out of which most importantly we are going to discuss now. Just a minute. Right. So reforms and structures processes. So there are two types of reforms that we are supposed to make. एक structural reforms था और एक jurisdiction of United Nations Organization का reforms है. ये दो चीज को ऊपर ध्यान देना था हमें. So let's talk about structural reforms. Let me see how much time is left. It's 22 minutes completed, right? So in next 5 minutes, let me just introduce what exactly the structural processes, the structural reforms. I will not be discussing this particular topic. In the next modules, I will discuss both the reforms simultaneously, right? So do you understand understand all these things, students? समझ में आ रहा आप लोगों को? And please make the research. आप research क्या करिए? These are all the things are you can Google it in the fingertip. Google करें, research करें कि क्या क्या changes हुआ है, what amendments being done, which Secretary General has done what, कैसे ये पहले कोल्ड वॉर के टाइम में कैसे ये बायस्ड हुआ था, कैसे एक्टेड लाइक ए सैंडविच इन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, एंड नाउ एटलीस्ट इंडिपेंडेंटली कुछ काम कर सकते हैं. सो ऑल द थिंग्स दैट यू आर सपोज टू ऑल्सो डिस्कस, यू कैन से. सो जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब क्या है? एक स्केलेटन, एक स्ट्रक्चर बना स्ट्रक्चर जो कि हम कॉन्क्रीट फॉर्म में हम देख सकते हैं जिसको, दैट इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. Okay, suppose if I can speak about the structural reformation in India, ये हम structural reform इंडिया में कर लें तो क्या करेंगे हम? structural reformation, हमारा structural reformation क्या होगा? We are having 4 important pillars of the democracy. क्या क्या है 4 important pillars? Legislatures, that is your parliament at the center, and state legislatures, विधानसभा, विधान परिषद in all those states. इसमें क्या reforms किया जा सकता है? जैसे इंडिया में भी population बढ़ते जा रहा है, राइट? लेकिन जो लोकसभा के मेंबर्स जो थे आज भी इतना ही है. तो जैसे पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से लोकसभा के मेंबर्स होते हैं. दैट्स व्हाई उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ सीट्स इन लोकसभा, क्योंकि द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया. सो वो रिफॉर्म्स की भी जरूरत है. सो एक स्ट्रक्चर मतलब दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द स्ट्रक्चर्स आर. द स्ट्रक्चर्स लाइक लेजिस्लेचर, इंडियन पार्लियामेंट एट द सेंटर, एट द फेडरल स्ट्रक्चर में, फेडरल स्ट्रक्चर में इंडियन पार्लियामेंट है, एंड स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट विधानसभा एंड विधान परिषद है. द सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव, दैट इज द प्रेसिडेंट एंड द अदर्स और ऑल द सेक्रेटेरिएट, यू कैन सी द ब्यूरोक्रेट्स, दैट्स कमिंग ऑन एग्जीक्यूटिव. द थर्ड वन इज जुडिशियरी, व्हिच इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स इन इंडिया, एंड वी आर हैविंग 3 टायर जुडिशियल सिस्टम, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ऑल दोस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, राइट? जब बीच में जरूरत पड़ता है इसमें भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन हुआ, एंड कंज्यूमर कोर्ट्स अंदर आया, लोक अदालत अंदर आए, लोकायुक्त आया, लॉट्स ऑफ चेंजेस बीइंग मेड अक्रॉस द ईयर, इवन इन आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम, और यू कैन से इन टर्म्स ऑफ विधानसभा, विधान परिषद, ऑल्सो लॉट मेनी चेंजेस बीइंग मेड अक्रॉस द ईयर, लॉट मेनी अमेंडमेंट बीइंग अक्रॉस द ईयर. सो लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, these are 3 others. The fourth and very important one, that's the election commission. In a democratic country, election commission played a very pivotal role, very important role, and it should be free एंड इम्पार्शियल होना चाहिए इलेक्शन कमीशन. सो ये जैसे हमारे 4 पिलर्स हैं, और इसको जैसे रिफॉर्मेशंस का, स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशंस की अगर इंडिया में जरूरत है, ये 4 पिलर का स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशंस करना होगा. ऐसे ही यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन तो कहाँ करें?
दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जहां पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशंस की जरूरत है, जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। जनरल असेंबली में एज सच बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशंस की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट्स ऑथराइज एक्टेड एज ए वर्ल्ड पार्लियामेंट, एंड पूरे रेगुलेशंस, जितना भी रेगुलेशन है जनरल असेंबली में सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है या 2/3 मेजोरिटी से पास होता है। एंड जितना भी मेंबर्स कंट्री है, ऑल द मेंबर्स कंट्री, दो दे सेंड 5 members from each of the members country to UN General Assembly, but these 5 members can only cast 1 vote. It means irrespective of its strength, power, position, GDP, what else it may be, each members country has to only cast 1 vote. चाहे वो USA हो, राइट, हार्ड लीड्स मैटर, और हांगकांग हो और सिंगापुर हो, हार्ड लीड्स मैटर, सभी का वोट वैल्यू समान होता है। ईच कंट्री हैज 1 vote एंड इक्वल वैल्यू इन जनरल असेंबली। इसलिए जनरल असेंबली का एज सच बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस की जरूरत नहीं है, बस यस सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इज अदरवाइज नोन एज द सोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी रिफॉर्म, बिकॉज इवन इफ यूएन जनरल असेंबली में 195 members हैं सपोज, and all 195 members passed the resolutions in favor of India for anything else, right? And that particular resolution has to be finally, you can say, passed from the Security Council. Security Council में भेज दिए। Security Council में कितना मेंबर है? 5 परमानेंट मेंबर हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर, मतलब 15 मेंबर्स हैं। तो 8 मेंबर्स भी अगर वोट करते हैं तो हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ पे मान के चलो ऑल 14 मेंबर्स दे कास्ट इन फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजुलेशन, लेकिन एक भी जो परमानेंट मेंबर है अगर वो नेगेटिव पावर यूज कर देता है, नेगेटिव पावर मीन्स द वीटो पावर, दैट बिल इज नॉट गोइंग टू बी पास्ड। सो दिस इज व्हाट ए बिग क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स अगर 195 मेंबर्स कंट्री हैं तो 194 कंट्रीज वन साइड एंड 1 परमानेंट मेंबर्स अदर साइड। सो दिस व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इन सिक्योरिटी काउंसिल। कोई डिक्टेटरशिप वाला जमाना नहीं रहा अभी। जिस टाइम ये बना था 1945 में, दैट वाज द एरा ऑफ फासिज्म इन द वर्ल्ड। तो ये फासिस्ट और फासिज्म से इन्फ्लुएंस होके हुआ था आपको जो वीटो पावर दिया गया था, बिकॉज वीटो पावर, अगर वीटो पावर को आप एज ए पॉजिटिव पावर यूज करते इट्स ओके, बट वी हैव सीन across the year, you can say, and the veto powers usually being used as a negative powers. I'm having one slide, let me show you if I can. Yes, I got that slide, right? If you can see this particular slide, you can see it, that use of veto power up to 2006 by the permanent members. कौन कितना किया है देखो। USSR, that's the present Russia, 122 times is used the veto power, negative power, सबसे ज़्यादा, मैंने मोर देन टोटल अगर 200 बार अगर हुआ है तो 122 बार सिर्फ रशिया इसको यूज किया है। यूएसए यूज्ड हर वीटो पावर फॉर 82 टाइम्स, यूनाइटेड किंगडम 32 टाइम्स, फ्रांस 18 टाइम्स एंड चाइना इज ओनली 4 टाइम्स। दिस इज व्हाट दे हैव यूज्ड देयर वीटो पावर, और वीटो पावर सेड टू बी द नेगेटिव पावर। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेजुलेशन, किसी ना किसी चीज़ को रोकने के लिए ये यूज किया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट the structural transformation, what are the structural transformation required, and in terms of the jurisdictions, what changes needed in the jurisdiction of the United Nations organization. Till then, stay at your home, stay safe. Thank you. God bless you.